Hi guys, welcome to All About. This is Aditya. I hope I am audible and visible to all of you clearly. So first of all, best of luck to all of you for the IBPS PU mains examination. Keep in mind that it is the best way to predict your future is to create it. So while writing this examination, you are actually going to create your future. These were the words said by Abraham Lincoln. तो फोकस रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा. Keep in mind that accuracy is the most important thing while writing the examination. And if you are watching this video after your examination, I wish that your exam went well. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. क्विकली डिस्कस कर लेते हैं 24th and 25th के करंट अफेयर्स को. आई ट्राई टू कीप द सेशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल, सो न्यूज विल बी कवर्ड इन द मिनिमल टाइम. So if you are watching the session for the first time, guys, please do download the Hollywood application. Link is given in the description. Subscribe the Hollywood YouTube channel. Press the bell icon to never miss it. For my PDF, you guys can go through with the GE Genius Telegram group. You'll be able to find all my PDF in the file option in the GE Genius Telegram group. So mega sale of 35% is going on the Hollywood platform. So if you want to subscribe the Hollywood courses, test series, mock test, go and use the coupon code Aditya today, ADITY Aditya, for the maximum discount and prepare under the mentorship of Aditya sir. GE Genius Pro Batch one-stop solution for the preparation of all the banking examination. You can join it by using the code. आज के न्यूज़ पर चल रहा हूँ. न्यूज़ नंबर 1. News is related to Reserve Bank of India. So RBI allowed Canara Bank and SDFC Bank for rupee trade with Russia. अभी यहाँ पर दो अकाउंट्स की बात होगी. दैट वन इज कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट, अनदर इज कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट. और बेसिकली यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट न्यूज में है आपके पास. लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो फर्स्ट. सो इंडिया, एनी इंडियन बैंक, फॉर एग्जाम्पल HDFC ले लेते हैं, HDFC, देन इंडियन करेंसी रुपी. एनी अदर country, for example USA, United States of America. The Bank of USA is you can take the example as HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, right? Although its headquarters is located in London, just I am taking example. And the currency of USA is dollar. So when Indian bank is maintaining account in foreign country, in a foreign bank in foreign currency, that account is called nostro. जब कोई इंडियन बैंक फॉरेन कंट्री में जाकर अपना अकाउंट मेंटेन करता है एक फॉरेन बैंक में फॉरेन करेंसी में, उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रो. इसी को ऑपोजिट होता है वॉस्ट्रो. वॉस्ट्रो मीन्स फॉरेन बैंक इज मेंटेनिंग अकाउंट इन इंडिया इन इंडियन करेंसी, in Indian bank in Indian currency, that is called Vostro. So these accounts are used for the settlement purpose. Fund settlement के लिए इन accounts को use किया जाता है. So recently RBI allowed Canara Bank and SDFC to trade with Russia in Indian currency rupee. That Russian while doing the trade they can make the payment directly in the Indian currency rupee. For this रशियन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन वॉस्ट्रो अकाउंट. तो रशियन बैंक्स जो हैं वो यहां पर हमारे पास वॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करेंगे इन HDFC बैंक, इन कैनरा बैंक. ऑल्दो 5 इंडियन बैंक्स आर अलाउड टू मेंटेन दीज अकाउंट्स नाउ. ऐसे 5 बैंक्स हैं जिनको RBI ने क्लियरेंस दिया है that they can start trading directly in rupee and they can accept the payment in rupee with the help of these Vostro accounts. So UCO Bank है, Union Bank है, IndusInd Bank है. So UCO, Union, IndusInd Bank and remaining two are Canara Bank and HDFC. So these are the 5 banks at present. Those are allowed by the Reserve Bank of India to maintain the Vostro account. Point clear हो गया होगा ये. Apart from this, 2 Russian bank have central bank approval. That is, one bank is Asber and VTP. Both bank have branches in India. So these banks are also allowed to do the transactions in Nostro and Vostro accounts. तो इनको भी allow किया है Nostro Vostro transactions के लिए. Next news है OECD. So OECD recently decreased the GDP rate of India to 6.6%. Previous prediction was 6.9%. पहले का prediction 6.9 था. Now it decreased from 6.9 to 6.6%. Now when you will be going to write the SBI CBO examination, next year IBPS PO means SBI clerk means, in that examination this data will be important. So start picking data from now onwards. Similarly, CRISIL also degraded the GDP rate prediction of India from
7.3% to 7%. तो क्रिसिल ने भी कम किया है. Previous prediction was 7.3%. Now the prediction is 7.4%. For the next financial, this is for the current financial year. ये आपके FY23 के लिए, that is FY22-23. Now for the financial year 24, also it has been decreased from 6.5% to 6%. तो इसके लिए भी 6.5 से 6% prediction किया है. Now here you have the updated list of the different organizations and their GDP rate predicted by them for India. तो इंडिया का GDP rate जो prediction है from the different organizations. Next news, Airtel Payment Bank launches face authentication based saving account facility. Means in Airtel Payment Bank saving account can be opened with the help of eKYC facility. तो eKYC की help से इसमें saving account open किया जा सकेगा. ठीक है. So most important thing, it is easy that online also you can open your account with the help of your face recognition. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कैमरा ऑन करके आपको अपना फेस रिकॉग्निशन के हेल्प से KYC कंप्लीट करेंगे एंड आधार नंबर विल बी शेयर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ KYC. तो आधार नंबर वहां पर आपका KYC कंप्लीट करने के लिए eKYC इलेक्ट्रॉनिक KYC कंप्लीट करने के लिए यूज हो जाएगा. सो दिस इज द रीसेंट फैसिलिटी, अपडेटेड फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय एयरटेल पेमेंट बैंक विद द हेल्प ऑफ विच कस्टमर्स कैन ओपन द अकाउंट विदाउट विजिटिंग द बैंक ब्रांचेस. तो बैंक पहुंचे बिना भी कस्टमर क्या कर पाएंगे, अकाउंट ओपन कर पाएंगे. नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक. कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक रिसेंटली got the national award from Pension Fund Regulatory Development Authority of India, that PFRDA. PFRDA is a regulator in the pension sector. So this award has been given to the bank to achieve a big target of offering Atal Pension Yojana. For the financial year 22-23, Karnataka Vikas Gramin Bank has offered approximately 69,000. Karnataka Vikas Gramin Bank has offered 69,132 account अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 50,320. मतलब अपने टारगेट को कंप्लीट करके इन्होंने और ज्यादा अचीवमेंट किया है टिल नाउ इन द फाइनेंशियल ईयर. स्टिल ऑलमोस्ट 1.5 क्वार्टर इज रिमेनिंग. उसके बाद भी इन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया. नाउ इट इज फॉर अटल पेंशन योजना. याद रखेंगे अटल पेंशन योजना से रिलेटेड. नाउ रीसेंट अपडेट रिलेटेड टू अटल पेंशन योजना इज फ्रॉम October 1st onwards. From 1st of October onwards, taxpayers are not allowed, they are not allowed to open the Atal Pension Yojana scheme. तो अटल पेंशन योजना में taxpayers को allow नहीं किया गया है from 1st of October onwards, that they can't open or they can't use this Atal Pension Yojana scheme. I hope my points are clear. आगे चलें. Mr. Subrat Kumar, I'll just come back to the screen. So Mr. Subrat Kumar has been appointed as the Executive Director of Bank of India. If you remember, recently RBI made a big change that the Executive Directors of the banks can be appointed, especially for the public sector bank, that they can be appointed for 10 years now. Previously the duration was 5 years. तो 5 years का duration था. अभी वो duration आपका कितना कर दिया गया, 10 years कर दिया गया. So it will give a good chance to the youngsters also, or the new management, the people with the more knowledge and less experience. मतलब ऐसे लोग जिनका experience कम भी है but they are qualified or they are good enough to manage a bank, they will get the opportunity to enter up into the bank. तो उनको भी एक opportunity यहाँ से मिलेगी. So there are lots of executive directors recently appointed like Lalit Tyagi sir, Bank of Baroda, Vinod Kumar sir, Punjab National Bank, Ashok Chandra sir, Canara Bank. Although individually no need to learn the name, it is just for the knowledge I was sharing. यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है MD and CEOs for the 10 years. That recently government of India made the rule that public sector bank MD, CEOs, directors, they can be appointed for the duration of 10 years instead of 5 years. चलिए आगे चलें. Mr. Vineet Kumar has been appointed as the CEO of खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. सो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के CEO अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली मिस्टर विनीत कुमार सर. सो मिस्टर विनीत कुमार नाम याद कर लेंगे अच्छे से. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC CEO recently appointed. So he is the officer of 1993 batch, already worked with the multiple project funded by World Bank. तो World Bank के जो funded projects हैं, जैसे कि एक आपका मुंबई रेल विकास कोऑपरेशन लिमिटेड था. So he has already worked as a chief electrical engineer in this project. इन्होंने प्रोजेक्ट लीड किया हुआ. He have experience and now appointed as the CEO of खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. रिसेंटली अपॉइंटेड मेंबर्स का यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट या लिस्ट है. Member of International Committee for Weight and Measure, Venugopal
Venugopal Achanta sir has been appointed. Mr. Arun Goyal appointed as the election commissioner of India. तो election commissioner appoint हुए, not chief election commissioner, याद रखिएगा. चेयरपर्सन ऑफ नेशनल पेंशन ट्रस्ट सूरज भान सर. ONGC मिस्टर अरुण कुमार सिंह सर. DCGI रीअपॉइंट हुए हैं मिस्टर VG सुमनी सर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अनदर 3 months, अगले 3 महीने के लिए. सूर्य कुमार यादव, वन ऑफ द यू कैन से दैट वन ऑफ द गुड और फेमस cricketer of Indian cricket team, Mr. Surya Kumar Yadav, recently appointed as the brand ambassador of Urban Gabru. Urban Gabru is a company which is offering men's grooming product. तो मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको ऑफर करती है, उनके लिए जो अ टाइप ऑफ यू कैन से दैट फेस क्रीम, फेस वॉश, सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अर्बन गबरू. सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन गबरू. After that you have a long list related to the recently appointed brand ambassadors. Neeraj Chopra appointed as the friendship ambassador of Switzerland. Lionel Messi appointed as the brand ambassador by Baiju recently. Then Yuvraj Singh appointed T20 World Cup for the blind brand ambassadors. सौरभ गांगुली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक. एड्स भी आने लगे हैं टीवी पर. तो यहाँ पर आपके पास पूरा लिस्ट है क्रिकेटर्स का भी स्पेशली. Next news are related to appointment but at the international level. President of Kazakhstan recently Kasim Jomart has been appointed. Kasim Jomart has been elected as the president of Kazakhstan. If you remember few days before, the capital of Kazakhstan made back to Astana. 2019 में क्या हुआ था? In 2019, Kazakhstan administration took the decision to change the capital from Astana to Nur Sultan. तो उस समय उन्होंने अस्ताना से नूर सुल्तान कैपिटल किया था. अभी आपका कैपिटल चेंज हो गया है वापस से नूर सुल्तान से अस्ताना. एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अपॉइंटेड. सो द कंट्री इज इन न्यूज. डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांस यहाँ से बनते हैं. न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, डू रिवाइज देम वन बाय वन at least twice a week, so it will be easy for you to remember near to the examination. एग्जाम के टाइम पर आपके ऊपर फिर बर्डन नहीं आता है उसके कारण. TG Sitaram appointed as the chairperson of AICTE, that is All India Council for the Technical Education. If you remember, UGC chairperson Mr. Jagdish Kumar was holding the additional charge from September 2021 onwards till now. जगदीश कुमार सर जो हैं वो चेयरपर्सन है यूजीसी के. उनके पास एडिशनल चार्ज था आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर अनिल सहस्त्रबुद्धि. So Anil Sahasrabudhe sir retired last year in September 2021, and after that Mr. Jagdish Kumar was holding it in the additional charge. Finally, Mr. TG Sitaram appointed as the chairperson of AICTE recently. ठीक, आगे आ जाएं. So यहाँ पर आपके पास लिस्ट है अपॉइंटमेंट्स के. मैं नेक्स्ट न्यूज़ पर मूव करता हूँ. India's company that is leading steel company in India called Jindal Steel. आपने सुना होगा नाम Jindal Steel, India's steel company. Basically they are in steel mining infrastructure project, Jindal Steel and Power. Jindal Steel and Power is the name of company. They recently got a tender. They won a tender of 300 megawatt of coal fire power plant in बोस्टवाना. सो बोस्टवाना में इनको अभी रिसेंटली एक 300 मेगावाट का सेटअप करने का, बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिंदल स्टील को. बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है. व्हेन वी विल बी गोइंग फॉर SBI CBO SBI PO एग्जामिनेशन, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सच एग्जाम. तो आप कंपनी का नाम याद कर लें. आफ्टर दैट 300 मेगावाट कैपेसिटी है वो याद कर लें. ये प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली इनको मिला है जिंदल स्टील को. ठीक है. Botswana capital currency is also given here, so for the static knowledge you can pick it also. 27th conference of DGP, Director General of Police, head of CPOs Northeast, has been organized in Agartala recently. So it was inaugurated by the Chief Minister of Tripura. Chief Minister of Tripura ने इसको inaugurate किया था, Manik Saha sir. So Mr. Manik Saha, who is the Chief Minister of Tripura, he has inaugurated recently. So it was the conference of बिग पुलिस ऑफिसर्स. जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ है, 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो इट इज़ नॉट एट द स्टेट लेवल, इंटर स्टेट लेवल पर भी ये था. सो यूजुअली इन वन स्टेट वी हैव वन DGP. एक स्टेट के एक DGP होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, विच इज़ द हाईएस्ट रैंक इन द डिपार्टमेंट. एक स्टेट में एक ही रैंक होती है, बिल्कुल हाईएस्ट रैंक. आफ्टर दैट मिनिस्ट्री स्टार्टेड, तो होम मिनिस्ट्री आ जाती है, उसके बाद तो होम सेक्रेटरीज आ जाते हैं. तो इनका अभी जो है 27th कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ है. नेक्स्ट है
Ashwini Vaishnav launches entrepreneurship cell at CDOC campus in Delhi. So Delhi campus, Center for Development in Telemathematics, that is C. Dot, has been inaugurated by Mr. Ashwini Vaishnav recently. So this center will be working on 5G technology, quantum key distribution, advanced security projects. So AI, 5G, quantum key, इनके ऊपर ये काम करेगा. Advanced जो technologies हैं, on that it will be working. This campus will be working. The name is CDOC. So you can get the question, what is the full form of CDOT? In which campus it was inaugurated by whom? 3 क्वेश्चन बनेंगे. PM मोदी ने inaugurate नहीं किया है. Next is Sangai festival completed or conducted in Manipur. It is one of the largest tourism festival of Manipur. Recently, 11th edition of such festival was concluded. 10-day carnival concluded on 30th of November 2022. It is named on the name of state animal of Manipur. Manipur का state animal है संगई, उसके नाम पर इसको रखा गया है फेस्टिवल को. And after the COVID-19 pandemic, from last 2 years, this event was not that successful because of the COVID-19 pandemic. This event was not successful from the last 2 years properly. This year, with the proper enthusiasm, it has been conducted again. So it was the 11th edition that is conducted in which state? Manipur. Usually static GK के फॉर्म में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं. Free trade agreement has been signed in between India and Australia. So taxes relaxations मिल जाते हैं इसमें for the businessmen if they are doing the export and import between the countries. So that is called bilateral trade relation or bilateral trade agreement. So India and Australia के बीच में recently sign हुआ है ये. So it will become the mutually agreed date पर it has been signed. So it will give the boost for the export and import or the bilateral trade between Australia and India. It will provide duty-free access to the Australian market over 6,000 broad sectors of India. तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे products हैं which will be sold to the Australia. It will increase the export definitely. Textile, leather, furniture, jewelry, machinery, they will get the boost from Indian export in the form of Indian export. India and European Union signed agreement on climate quantum tech. So India and European Union signed cooperation in the field of areas of climate modeling, quantum technologies, building trade and technology council. तो बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में और क्लाइमेट मॉड्यूलिंग मीन्स हाउ द बिजनेस कैन बी बूस्टेड विदाउट इम्पैक्टिंग टू द क्लाइमेट और CO2 इमिशन को कम करना. सो ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स to increase the trade also with the support of technology without impacting to the climate. So on this a council will be formed in between India and European Union. So this is what the agreement has been signed recently. Here you have the list of recently signed MOUs. Awards पर आ जाते हैं. Rajendra Pawar sir awarded with the Lifetime Achievement Award of FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. So it was conducted at 8th edition of FICCI Higher Education Excellence Award in New Delhi. Under Pawar sir, NIIT has played important role shaping the growth of Indian IT sector by creating the manpower drive momentum. So he was working for NIIT and recently honored with the Lifetime Achievement Award by FICCI. FICCI से related एक और news है. If you remember, Mr. Subrakant Panda recently appointed as the president of FICCI. FICCI के president appoint हुए Mr. Subrakant Panda sir. FICCI Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry 1927 में फॉर्म हुआ था. न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर. सेक्रेटरी जनरल दिलीप चुनाय, मोना दीपा मुखर्जी डायरेक्टर जनरल हैं एंड प्रेसिडेंट इज मिस्टर सुब्रकांत पांडा सर. List of recent awards for your revision purpose. India and Indonesia joint exercise Garuda Shakti started in Karawang. Karawang, Indonesia में conduct हुआ है Garuda Shakti defense exercise. It was the 8th edition of defense exercise conducted between India and Indonesia. तो इनके बीच में 8th edition का defense exercise हुआ है. 13 days training program will be working out under it. And the list of defense exercise for the revision purpose. 24th of November celebrated as गुरु तेग बहादुर मार्टम डे. तो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर के. ही वॉज फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग सिख एंड हिंदूज
ड्यूरिंग 17th century because of by force people were trying to convert the people into Islam. तो उसमें इन्होंने काफ़ी प्रोटेक्ट किया था हिंदूज़ को और सिख को, सिख और हिंदूज़ को इन्होंने प्रोटेक्ट किया था. दैट इज़ वाई ही वॉज वेरी फेमस, गुरु तेग बहादुर सर. एंड at the time of Aurangzeb, at the time of basically Aurangzeb, so he was the 9th गुरु. ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यूजुअली एसएससी वगैरह में आता है. ही वॉज द 9th गुरु ऑफ सिख कम्युनिटी. तो सिख कम्युनिटी के 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी. 24th ऑफ नवंबर को इनका मार्टम डे सेलिब्रेट किया जाता है. थैंक्स गिविंग डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 24th ऑफ नवंबर. So objective is giving the thanks for the harvest of the year. Basically for the farmers, it is dedicated to the farmers that they are giving food to us by cultivation, hard work and after that harvesting. तो इसीलिए थैंक्स गिविंग डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है. So this is done from my side. I have tried to keep the sessions short so you can cover the all the news of last 2-3 days in time. Now from Monday morning, guys, attend the TNA on time because we will be coming back with the proper structure of TNA, homework, MCQs, daily practice. So TNA will be your one-stop solution for the complete preparation of your current affairs for any upcoming banking, insurance or finance related examination. Please like the session. Ask your friends also to join it back. ठीक है, चलिए guys. Thank you. जय हिंद.